Students, today we are going to solve the sums of exercise 2.1. The topic is polynomial. Question number 3. Give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. We are asked for a binomial of degree 35. We know that a binomial has two terms which are connected with the operations addition, subtraction, multiplication and division. So we can solve it as, suppose these two blocks are representing the terms of a binomial which are connected with plus and minus sign. Here in the standard form we can write it. The first term has its two parts. First part is for its coefficient. Let me take it a, and the second part is for a variable and its power as 35. This will be our first term. In another term we have another coefficient and a variable, and variable has its power from 0 to 34. The power of variable can take any value from 0 to 34. This is the second term of the binomial, where a and b are real numbers and a is not equal to 0. आप देखेंगे रियल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं जो कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं. होल नंबर में 0, 1, 2, 3 और बाकी ज्यों का त्यों जो कि नेचुरल नंबर में होते हैं अनंत तक. उसके बाद इंटीजर्स में 0 और 0 की इधर धन 1, धन 2, धन 3 जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो इन्फिनिटी तक. 0 के बाईं ओर ऋण 1, फिर ऋण 2 और अनंत तक. और फिर रेशनल नंबर्स जैसे कि इसमें आपका फ्रैक्शन वाले आ सकते हैं 1/2, 3/4 एटसेट्रा, ये भी आ सकते हैं. और फिर इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, पाई एटसेट्रा. तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला आया था, तो ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ से कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसका मान 0 नहीं होना चाहिए. 0 हम नहीं लेंगे. बी को हम 0 ले सकते हैं. तो अब जब हम इसमें कोई नेचुरल नंबर रखेंगे, माना हम ए की जगह पे 2 रख रहे हैं, हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा 2. और यदि हम वेरिएबल माना x ले रहे हैं तो 2x⁵. यदि हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस साइन प्लस. b को हम कुछ भी मान ले सकते हैं इन सब में से. मैं ले रहा हूँ इसको √3. हमने वेरिएबल x लिया है, इसलिए x की घात 0 से लेकर के 34 तक. यदि 0 लेंगे तो केवल √3 बचेगा. तो हम 0 से लेकर के 34 तक इसकी घात कुछ भी ले सकते हैं. तो ये बनेगा हमारा 2x की घात 35 धन √3 x⁵ भी हो सकता है. और एक अन्य उदाहरण हमारा 2x⁵ प्लस, यदि हम x की पावर 0 लें तो यहाँ पर हम √3 या √5. एक अन्य उदाहरण हो जाएगा x⁵ प्लस x भी हो सकता है. इसी तरह x⁵ माइनस 3. इस तरह से असंख्य इसके जो हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं.
सेकेंड पार्ट देखिएगा, एक मोनोमियल हमको दिखाना है और उसकी डिग्री होनी चाहिए 100। हम जानते हैं कि मोनोमियल में केवल एक ही टर्म होता है। इसके दो भाग हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कोफिशिएंट वाला गुणांक और दूसरा होगा वेरिएबल वाला, और वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होनी चाहिए 100। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, वो नंबर होना चाहिए रियल नंबर। तो इस तरह से अगर सूत्र रूप में देखें ए, और सपोज हम वेरिएबल ले रहे हैं एक्स, तो एक्स टू द पावर 100 ये बनेगा, जहाँ ए क्या है, रियल नंबर है, और where a is a real number and a is not equal to 0। यदि a 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और पूरा टर्म 0 होगा तो ये मोनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए ए का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। और ए एक रियल नंबर है तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल सभी नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो यदि हम ए की वैल्यू माना 7 ले रहे हैं, 7x टू द पावर 100। यदि वेरिएबल y ले रहे हैं तो 7y टू द पावर 100, या ओनली x टू द पावर 100 भी हो सकता है, y टू द पावर 100 भी हो सकता है। यदि z लेंगे तो z टू द पावर 100 भी हो सकता है, √3x टू द पावर 100 हो सकता है, 1/2 y टू द पावर 100 हो सकता है, 3/4 z टू द पावर 100 हो सकता है। इस तरह से अनेक एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स, write the degree of each of the following polynomials. We are given some polynomials. The first part of this question is 2 plus x square plus x. In the standard form, it will be x square plus x plus 2. In the standard form, we arrange the terms in decreasing order of the power of the variable. Here in this polynomial, the maximum power of the variable is 2. Here in this term it is 1, and here in this term it is 2. So the degree of polynomial is 2. So it is a polynomial of degree 2. Second part, 5x to the power 3 plus 4x square plus 7x. Here in this polynomial, the variable is x, and there are 3 terms in this polynomial. Here in this term, the power of variable x is 1. In this term, the power of variable is 2, and in this term, the power of variable is 3. The maximum power of the variable in this polynomial is 3, so it will call the polynomial of the degree 3. This is the polynomial of degree 3. The third part of this question is 4 minus y square. Here variable is y, and the variable has its maximum power 2, so it is a polynomial
of degree 2. Fourth part of the question is 5t minus root 7. Here we have the two terms in this polynomial in which t is a variable and the maximum power of this t is 1, so it will be a linear polynomial. Here the variable is 2, variable is t, and it has its maximum power as 1. So this polynomial is of degree 1. In fifth part of this question, we have only a constant 3, which can be written as 3 into y to the power 0, or we can write it 3 into x to the power 0, because y to the power 0 is 1 and x to the power 0 is again 1. So we can conclude that 3 has 3 is also a polynomial. It has only one term and the variable of this polynomial has its maximum power as 0. So 3 is a polynomial of degree 0. Question number 5 states, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. The first part is x square plus x. Here we have two terms in this polynomial and the variable is x. The variable x has its maximum power as 2. So it will call a quadratic polynomial. In which polynomial the variable has its maximum power as 2, it is called quadratic polynomial. Here variable x has its maximum degree as 2. We know the polynomial of degree 2 as quadratic polynomial, so this one is a quadratic polynomial. Question number 5, part 2, we have the polynomial x minus x to the power 3. Here the variable has its maximum power as 3. We call it as cubic polynomial. So this one is a cubic polynomial. In example third, y plus y to the power 2 plus 4. Here the variable is y and we are seeing that here the power of y is 1 and in this term it is 2 and the maximum power is 2. So this will be a quadratic polynomial. Fourth part, we have 1 plus x as a polynomial. Here this polynomial has two terms, one
constant and one with variable, and the variable has its maximum power as 1, and we know the polynomial in which a variable has its maximum power as 1 is called linear polynomial. In part 5, we are given 3t as a polynomial. Here t is a variable which has its maximum power as 1, so it will be also a linear polynomial. In sixth part, we are given r square in which the variable is r and it has its maximum power as 2, so it will be quadratic polynomial. In last and seventh part, we are given 7x to the power 3. Here, this polynomial has only one term and x is the variable of this polynomial which has its maximum power as 3. When the variable in any term of a polynomial has its maximum power as 3, we will call the polynomial as cubic polynomial.